folks, a brand new week for you, domestic politics. While foreign policy, obviously we seem to be making the right moves, but for every one step forward in foreign policy, the security environment internally because of domestic politics is deteriorating by the day, by the hour. As Pranab Dhal Samanta writes, security elusive last mile. He says, the worrying developments in J&K are a grim pointer to India's rapidly deteriorating security environment, underlining an urgent need to prioritize national security regardless of the political cost. Regardless of the political cost, right? The first important step would be to refocus a security apparatus that seems to be pulling in different directions, basically trying to nail opposition, right? There's a storm brewing on the security front, promoted by external and internal factors that need to be understood within a larger security frame to fashion a cohesive response at all levels of governance, political, administrative, military, and intelligence. Okay. In this backdrop, re-emergence of old fault lines, Sikh extremism as evidenced in the divisions within the farmers' movement, ethnic strife in the northeast where extremists among Nagas, Mizos, and other groups are reasserting themselves, complicate the national security picture, stretch Delhi's resources, and fuel further uncertainty. Given this context, it is important the Indian security establishment develop a cohesive response. Here, somehow the pieces are just not falling into place because of domestic politics, domestic divisive politics. There's a dire need to arrest the drift within the security establishment and develop a cohesive approach on national security across agencies and forces before the challenge turns into a crisis, because when it comes to national security, a crisis hits harder and rarely brings opportunity. And these are the kind of stuff, total lawlessness in UP, lawyers shot dead in UP court, 4 cops have been suspended, okay? And this government's all about big terms and big headlines. Gati Shakti to assist economy, help save 20 lakh crores, says Goyal. Yeah, these guys never talk about so much money, it boggles the mind. But then you have Bhagwa trying to stir up the pot, create national security issues. RSS chief renewed demand for a national population policy. You guessed it right, targeting the Muslim community. Assam police issue alert on ISI Al-Qaeda strike. This is in Assam, right? Terrorists told to kill non-Muslim civilians. This is in J&K. Amid tensions, army chief in Jammu to review security. Intel, Pakistan has revived strategy of killing minorities in J&K, and this is essentially being fed by what we've been doing domestically for. This is called catching fire only because this is a reaction to the actions we've been taking for what Ashutosh Varshni writes, a Jim Crow Hindutva, where we are trying to downgrade the Muslims to second-hand citizens. And the backlash is happening in our neighborhood. Houses belonging to Hindus torched in Bangladesh clashes. Fresh attack on temple as tension remains in Bangladesh. Delhi calls up Hasina, asks India to guard against reaction. Now this is really crazy, man, right? Hasina is telling us to guard against reaction, and that is the actual ploy. And look at what Jharkhand says. Jharkhand brings back 61 workers, not from Jammu and Kashmir, but Himachal Pradesh, where they were being attacked by locals, folks. Jharkhand, guys, in Himachal, targets. But this could save us a little bit because, like I said, Emirates is also going to start a flight into Srinagar. J&K inks MOU with Dubai for real estate projects, IT Park. Security huddle on J&K, migrants begin to leave, and this is real bad news. And when you have, because stuff like this, Fab India collection sparks a row online. Ethnic wear retailer Fab India's new collection launched before Diwali. Christian Jashan-e-Riwaz ran into social media storm on Monday because apparently somebody is saying, hey, this is a Hindu festival. Go figure that out, right? Go figure that out. लखीमपुर कांड में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, उसे दिल्ली दरबार में मोदी और अमित शाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचनी हैं। प्रियंका गांधी का फायर ब्रांड दौरा, फायर ब्रांड आंदोलन भले उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती ना दे पाया हो, लेकिन प्रियंका गांधी के ऑपरेशन लखीमपुर ने उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया है। पंजाब के दलित मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बुलाना, लखीमपुर में बुलाना, उससे 50 लाख रुपए दिलवाना और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का लगातार फ्रंट पे आकर लड़ते हुए दिखना, भाजपा को चिंता लग रही है कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। योगी जी भले खुश हो रहे हो कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी का कुछ वोट कटेगा,
उनकी चिंता यह है कि किसी भी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ जाए, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है कि वो चुनाव को त्रिकोणीय बना दे। अलबत्ता ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश प्रियंका गांधी जरूर कर रही हैं। ये बात जब दिल्ली नेतृत्व को पता चली और जो रिपोर्ट्स गई इंटेलिजेंस की, उसने बता दिया कि लखीमपुर में अगर भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं को राहत देने नहीं जा सकते तो ये गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कल इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए और इस्तीफों में लिखा कि अगर पार्टी के नेता हमारे कार्यकर्ताओं का दुख दर्द नहीं समझ सकते तो फिर ऐसी पार्टी में रहने से फायदा क्या है। ये बात लिख रहे हैं, मौखिक रूप से कह रहे हैं, व्यक्तिगत बातचीत में कह रहे हैं। You must have just heard the tape before by Sanjay Sharma of 4 p.m. talking about Priyanka, what's happening in UP. But the security situation, this kind of stuff indicates that the security situation internally is out of control, and the government does not have hands over it, and mostly because of its own divisive politics, the Lucknow Delhi Darbar fight, the RSS fissures within the RSS. Remember that, fissures within the RSS. 2 Bihar laborers shot dead in J&K civilian killings at 12. At Singhu border fault line deepened, but Nihang says will stay put. The Nihangs are creating an issue with caste, and like I said, it's troubled waters, right? This particular the Andolan that's gone on from the farmers. However, Pakistan's going to fish in it, Khalistan's going to fish in it, but more important, the government is also fishing in it to break this up. So you gotta worry. Singhu horror, mob chops off man's hand, lynches him, one held. Lynching leaves Singhu's sight on edge. There was commotion when crowd thinned. We saw the body. Nihang's key suspect after Dalit Sikh man tortured, lynched at site of farm protest. Lynching as religion. Caste simmer, very political leaders are silent, right? But what is this, right? New thing. Murder man was daily wager from Taran Taran, father of 3. SKM calls for police probe at action, seeks to distance itself. Detention made, police file murder, FIR, Khattar orders strictest possible action. Fertilizers stocks dip as global prices surge, farmers are hit hard. So farmers are having no joy, and this government is not focused because of its domestic divisive politics, the fight between the Delhi and Lucknow Darbar, fissures in the RSS. Remember that. Farmers loot fertilizers amid shortages in Madhya Pradesh. Government invokes NSA against orders. That's the only thing they have in the playbook. SKM to hold rail roko today to see Teni's arrest ouster Mishra. He wasn't ousted. He was not fired. Rail roko on October 18th. If minister isn't sacked, says farmers. Many stranded, traffic hit as farmers block trains. So it did happen. The farmers are still there. They're not going away, folks. They are not. The government cannot wish them away. Cheers. हम लोग जो है सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो क्या उनसे गठबंधन होने की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। तो क्या छोटे दलों को अपने साथ में ले रहे हैं? कितने छोटे दल अभी तक आ चुके दलों हैं? को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लग गए हैं इसी अगले महीने में, क्या कहें सर? सुनने में आया कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है। तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है, रंग बदलना, दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सर, बीजेपी के एक नेता अभी लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन किसान परिवारों के यहाँ नहीं गए जिनके यहाँ मौत हुई है, क्या कहें सर? भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सर, ये जो रथ यात्रा है, इससे सर कई दलों में बहुमत आएगा, और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या लगता है 2022 So again, the tape before me will tell you the zamini hakikat in UP and how what's BJP trying to do. BJP office bearers meet to discuss elections in 5 states, farmer agitation, COVID strategy. Eye on caste votes in UP polls. BJP starts community meetings. That's all they have going for them is the caste equation. And this is what they do next. BJP finds Dalit face to reach out to Jatavs, counter Maya. So baby, it's baby Rani Maurya. But they got some other headwinds they're heading their way. Onion and tomato prices rise in festive season. Oil rates stable. Vegetable prices up due to fuel price hike. Rain, says data. This is another one that slammed them left, right and center. India slips to 101st rank in global hunger index behind Pakistan and Nepal. This is because of shortening heights. And the reason why we are becoming shorter, as data will show, I'm going to discuss this, is because of poor nutrition. Government rubbishes global hunger index, say questions methodology. Do they have anything else? Rubbish everything. Government, but this they have to do this. Government makes elaborate plans to celebrate 1 billion jabs. And why are they doing that? BJP pins hope on jabs drive scheme during pandemic for 22 polls. So that's the reason why they got to make a big deal about this. But people cannot let them forget the devastation that happened because of their poor handling of COVID. COVID continues to take a toll as jobless spikes in Delhi and J&K. And this is the other thing they are going to do. Andaman Peak to be named Mount Manipur. Andaman Peak to be named Mount Manipur. Are they really for real? BJP discusses ways to counter negative discourse on COVID. We should not let them forget this. But Congress, on the other hand, is going to keep giving them opening. BJP slams Congress for Patel's vilification. Why would you do that? Congress takes illiterate jab at PM. BJP targets Rahul. Why would you do that? I just can't understand why this Congress continues to be such a kiss-ass organization for the Gandhis, man. At the end of the day, Patel, and you got to take ownership of people like Patel, folks. Jai Hind. दो बातें जानिएगा। एक बात मैं लगातार पिछले 5, 6, 7 हफ्तों से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जमीन पर उतरने के पहले ही यह परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सीधे लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उनकी पहली जीत है, उनके अपने कैलकुलेशन से उस हिसाब से उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। दूसरी बात, कोई जीता हुआ पहलवान, कोई सब सोमा पहलवान जिसने 5 साल पहले बहुत बड़ी जीत हासिल की हो और उसको लग रहा हो, उसके सामने बड़े मुकाबले हैं कि अखिलेश यादव उसके सामने बहुत बेहतर लड़ेंगे, तो जाहिर नहीं करने चाहता है। वो अपने रंग ढंग में, अभी देखिए कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी का सामने नहीं आया है कि वो पब्लिक के बीच में इस बात का आभास होने दे कि अखिलेश यादव की जमीनी मजबूती से उसको कोई घबराहट। आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं, लोग करते भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। लेकिन ये असलियत है इलेक्शंस में जो मैंने देखा है, जो सत्तारूढ़ दल के 5 साल के कार्यकलापों से नाखुश होते हैं, उनकी एक पसंद होती है कि इन्होंने जो खराब किया बेहतर कौन कर सकता है, जीत कौन रहा है, लड़ेगा कौन इनसे अगर इन्होंने ठीक नहीं किया। तो एक तो नेचुरल बेनिफिट अखिलेश यादव को मिल चुका है। दूसरी, भीड़ की जहां तक बात है, अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी पहले से ही थी कि वो उन्हीं इलाकों से शुरुआत करेंगे जो इलाका बीजेपी डोमिनेटेड है या जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। और स्ट्रेटजी ठीक भी है। आप अगर अपने शत्रु के, राजनीतिक शत्रु की के पाले में जाके पहले खेलना शुरू करें और फिर अपनी थाह का अंदाजा लगाना शुरू करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और मेरा मानना है, जो मेरा अब तक का आकलन है, अखिलेश यादव के अंदाज, उनसे बातचीत, उनके क्रियाकलाप, उनकी जो रणनीति इस बार की बन रही है, मैं समझता हूं कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने इतना नियोजित तरीके से कोई चुनाव, दीपक शर्मा को याद है कि 89 में मुलायम सिंह मिनिस्टर बने थे, तब से लेकर हर चुनाव हम देख रहे हैं अखिलेश यादव वेल प्लान्ड इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ी टक्कर देंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि इसकी क्या दशा होगी।